Hello friends, I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in housing societies and will benefit both the managing committee and the society members. It has very simple language articles, draft of various applications, earlier webinar videos, जैसे आज हम कर रहे हैं तो उसका भी technical simple language which can be understood by everyone. As far as possible, speaker will not speak in technical or legal language. All friends are requested to listen carefully without interrupting the speaker. Questions, when the speaker has concluded his speech, we will be taking up questions one to one, and questions will be relating to today's topic only, and other questions will be ignored. Today's topic is self-redevelopment. कब करना है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फंडिंग्स कहाँ से आएंगे, वगैरह वगैरह पे उस सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे. बिफोर वी इनवाइट अवर की स्पीकर, लेट मी ब्रीफ यू ऑन सर्टन थिंग्स. कि जैसे आप अगर मुंबई से हैं या पुणे से हैं तो आपको पता है कि काफी बिल्डिंग्स 50 एक बरस की पुरानी हो चुकी है. और कई बार बीएमसी उसे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या बीएमसी या पीएमसी जो भी है वो उसे कई बार डिलैपिलेटेड बता देती है, मतलब डेंजरस टू लिव इन. बिल्डिंग खाली करो, और या तो लार्ज स्केल रिपेयर करना है अगर, तो इतने सारे ढेर सारे पैसे लग जाते हैं कि वो रिपेयर करना साधारण लोगों की बस की बात नहीं रह जाती. तो एक ऑप्शन ये बचता है कि या तो रीडेवलपमेंट में बिल्डर को दे दिया जाए, या तो आप खुद ही सेल्फ रीडेवलपमेंट करो. और उस बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग में रहना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अगर बिल्डिंग को डेंजरस या रिस्की डिक्लेयर कर देती है, जिसको कहते हैं हम C1 कैटेगरी. अलग अलग कैटेगरीज है, 4-5 कैटेगरीज है, उसमें C1 कैटेगरी बिल्डिंग को सबसे हाईएस्ट रिस्क वगैरह में डिक्लेयर करती है. I'll request all our participant friends to keep their microphones on mute. It's causing disturbance to us. फिर बाद में अगर डेवलपमेंट बिल्डर या डेवलपर से करा हो तो फंडिंग वो खुद करता है, लेकिन आप सेल्फ रीडेवलपमेंट करते हो तो क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, उस पर क्या क्या जरूरतें होती है, फंडिंग्स कहाँ से आएगा, कंसल्टेंट्स कैसे अपॉइंट करोगे, कॉर्पस फंड वगैरह टाइप की चीजें जैसे हैं तो वो कैसे होगा, और ऑल्टरनेट एकोमोडेशन एग्रीमेंट्स वगैरह कैसे होंगे, टेम्परेरी भाड़े पे जो जाएगा दूसरी जगह पे रहने के लिए व्यक्ति, परिवार, तो उसका फंडिंग वगैरह कैसे करोगे. ये सब सारी चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं. अभी कई बार क्या होता है कि जैसे रीडेवलपमेंट की बातें होती है सोसाइटी में, तो एक टिपिकली करप्शन है वगैरह वगैरह चीजें पे सामने इश्यूज आने लगते हैं. 1 मिनट प्लीज. ओके. अगर बिल्डर्स के थ्रू करा रहे हो तो बिल्डर अपने हिसाब से बिल्डिंग के प्लान्स वगैरह बदली करता रहता है. आप खुद करोगे तो वो सब नहीं हो पाता है. ये सब बहुत सी चीजें हैं जिस पे हम चर्चा भी करेंगे. अभी अगर एक टेक्निकल चीज ये भी देख लीजिए कि मेरी बिल्डिंग सिर्फ 10-15 साल पुरानी है, लेकिन जगह पहले से पड़ी हुई है, काफी पुरानी है. सॉरी, 10-15 साल पुरानी है, लेकिन प्लॉट एरिया मेरा बड़ा है, स्पेयर में जगह पड़ी हुई है. मैं, मेरे नाम पे, सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस भी हो चुका है, और सोसाइटी ये चाहती है कि हम इसे सेल्फ रीडेवलपमेंट करके या तो रीडेवलपमेंट करके हम कर सकते हैं. तो प्रश्न ये आता है कई बार कि 10-15 साल पुरानी ही बिल्डिंग है तो क्या रीडेवलपमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे. एक्स्ट्रा एरियाज के बारे में
हमारे स्पीकर आपको बताएंगे कैसा करना है वगैरह करके। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या फंडा है उसके अंदर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। जैसे उदाहरण के तौर पे कई बार क्या होता है कि बिल्डर या डेवलपर जब करता है तो कुछ ना कुछ कारण से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रह जाता है, डिफिकल्टीज आती हैं, बाद में तकलीफें होती हैं उसमें। सरकार की पॉलिसीज के हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे स्पीकर हैं श्री अकबर जीवानी। ही इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। वो ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हैं, उनको तजुर्बा है ये सब चीजों का। एंड वी हैव स्पेसिफिकली इनवाइटेड हिम टू लेक्चर ऑन दिस ऑल दिस टॉपिक्स। सो प्लीज लिसन टू हिम विदाउट इंटरप्टिंग। एंड आपके कोई भी प्रश्न सेल्फ रीडेवलपमेंट के ऊपर होंगे, डेवलपमेंट के ऊपर होंगे, रीडेवलपमेंट के ऊपर, तो उनके लेक्चर के बाद में हम प्रश्न उत्तर का सेशन करेंगे। सो नाउ आई इनवाइट मिस्टर अकबर जीवानी to share his knowledge on self redevelopment of old buildings, etc. Thank you, everybody. I now invite Mr. Akbar Jivani. Mr. Akbar Jivani, you are welcome. Please take over and proceed. Thank you, sir. So if you come to self-development, it is not a new concept. If you go back to 1960s, when people used to come together, get together, apply to the government for a piece of land, when the land was allotted, then they used to appoint an architect, then a contractor and build buildings. Now gradually Mr. Akbar, 1 minute. yeah, I'll request you to speak both in Hindi and English. Hindi, कॉम्बिनेशन okay, कर ले ताकि ठीक है, सभी लोगों को समझ में आए आसानी से। ओके। थैंक यू सर, गो तो अहेड जैसे प्लीज। कि मैंने कहा सेल्फ डेवलपमेंट जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो आज हमें ऐसा नया लग रहा है। 1960s में अब इन देखेंगे तो तभी भी हम सेल्फ डेवलपमेंट ही कर रहे थे जब ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते थे। दे यूज्ड टू अप्लाई टू द गवर्नमेंट फॉर अ पीस ऑफ लैंड, देन दे यूज्ड टू कॉल फॉर एन आर्किटेक्ट को बुला के प्लानिंग करके कॉन्ट्रैक्टर को करके आज वेरियस बिल्डिंग्स ऐसी बनी है। फिर ग्रेजुअली जैसा टाइम आते गया कॉन्ट्रैक्टर स्टार्टेड टेकिंग ओवर इन सेंस के हम सब करके देंगे, बना के देंगे, प्लानिंग करके देंगे। एंड देन ग्रेजुअली वी शिफ्टेड टू द बिल्डर ईरा वेयर बिल्डर यूज्ड टू टेक ऑल दी हेडेक। सब वो संभालते थे तो पब्लिक को भी रिलैक्स हो गया था कि चलो बिल्डर इज डूइंग, हमको कुछ करना नहीं है। देन ग्रेजुअली जब बिल्डर ईरा में द बिल्डर स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ ओवर ट्रेडिंग करना है, उसका बेनिफिट लेना है। और धीरे धीरे ड्यू टू रिसेशन कमिंग इन द प्रोजेक्ट्स वर गेटिंग स्टक। आज की तारीख में मोर देन 5000 प्रोजेक्ट्स आर स्टक ऑफ रीडेवलपमेंट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो आया है सेल्फ रीडेवलपमेंट, इसमें ऐसा है जैसे कि माय थीम इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स सेफर एंड स्मार्टर होम्स। दैट इज द नीड ऑफ द आवर आज हमको देखना है। क्योंकि हम अगर देखेंगे कि हम 50% ऑफ लाइफ अपनी घर पे गुजारते हैं, सुबह से निकलते रात का आते, फिर भी हम 50%। तो ये आज की तारीख में हमें एक सेफर साउंड और अच्छा घर होना जरूरी है। जो ओवर द पीरियड हमारी बिल्डिंग्स 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, उसको रीडेवलपमेंट करना जरूरी होता है। बहुत सारे सोसाइटीज बोलते हैं कि हम रिपेयर करेंगे, रिपेयरिंग में एक्सपेंसेस जाता है। अभी रिपेयरिंग में ऐसा है कि रिपेयरिंग विल गिव यू अ लाइफ ऑफ अनदर 5 years or 10 years. Old buildings are designed with old construction norms, hence cannot stand new climatic conditions. तो आज की तारीख में नया टेक्नोलॉजी आया है, नया डिजाइनर्स आया है, नया क्लाइमेटिक कंडीशंस है टू वेदर द न्यू बिल्डिंग्स। रिपेयरिंग में member has to shell off money, redevelopment members gets money also in terms of in a new area also. So it is always advisable कि आज हमें रीडेवलपमेंट करना है। रीडेवलपमेंट जो है कि हम जहाँ भी बिल्डर को बुलाते हैं, बिल्डर सब प्लानिंग करता है। सेल्फ डेवलपमेंट है जो सोसाइटी एक स्टेप आगे आती है, ये समझ के कि दिस इज वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू रिकंस्ट्रक्ट द हाउस विथ मोर एरिया एंड मोर कॉर्पस। क्योंकि आज एक भी सोसाइटी रीडेवलप होती है
तो उसका जो मेंटेनेंस आता है तो ऑलमोस्ट मिनिमम डबल या ट्रिपल हो जाता है, बिकॉज जो असेसमेंट आज प्रॉपर्टी का हो रहा है 1970 का बिल्डिंग का, 80 का बिल्डिंग का, आज वो असेसमेंट आज का रेडी रेकनर से होता है। तो ये लेके बाद गवर्नमेंट को भी बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन किया था हमने कि हाउ टू एनकरेज सेल्फ रीडेवलपमेंट, जहाँ मेंबर्स लोग आगे आते, दे पुट इन मच टाइम ऑफ देयर्स ऑफ कोर्स, बट इन रिजल्ट इज the things are under their control, they are getting more area, they are getting more FSI, and they get to understand कि what is the true potential, अपने प्लॉट का ट्रू पोटेंशियल आज के डीपी के हिसाब से क्या है। आज का डीपी में एफएसआई बेनिफिट्स दिया है, जैसे रेसिडेंस है उसको रोड के हिसाब से दिया है 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, लेकिन जो सोसाइटी समझो दे ऑन द कॉर्नर ऑफ द रोड और दे ऑन द मेन रोड, तो उनको कमर्शियल भी मिलता है जो अप टू 5 एफएसआई मिलता है। तो ये सब चीज एक ट्रू कंसल्टेंट आपको पूरा बता सकता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड एंड टेक अ डिसीजन। अभी सबसे अच्छी बात आज ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट इज गिविंग फुल सपोर्ट। Since 2019, government has supported self-development for societies to come forward with lots and lots of benefits. ये GR पास हुआ था 13 सितंबर 2019, and this GR में I'll just run through कि what are the benefits that a self-development will come. फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपको जो पोटेंशियल है एफएसआई का, जो भी एडमिसिबल एफएसआई आज के डीपी से, यू आर एंटाइटल टू गेट 10% मोर। अभी ये जो जीआर 2019 में निकला वो अभी तक पूरी तरह से सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, लेकिन अभी आज फिर एक मौका मिला है कि हम फिर एक बार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कि अभी सेल्फ डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द आवर। देयर आर मोर देन minimum 18,000 buildings who need redevelopment. Now, second thing is about other than FSI 10% more, the rehab flats जो है, stamp duty on it, if it is whichever way, it is at a very reduced rate which they are giving. Almost 1,000 rupees for flat for the rehab. Saleable component में आपको FS stamp duty लगता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको रीडेवलपमेंट में टीडीआर जो लगता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक एफएसआई 1 है या 1.10 है, यू कैन गो अप टू 2 और अप टू 3। और माडा रिलेटेड प्लॉट्स, आई जस्ट टेल यू, चारकोप में वन प्लॉट ऑफ 1400 स्क्वायर मीटर्स, बिकॉज ऑफ द प्लॉटिंग एंड ऑल दैट दे गॉट एफएसआई सैंक्शन ऑफ इवन 5.6। सो दैट इज वन बेनिफिट इज देयर। सो उसके लिए जो टीडीआर है, प्रीमियम भरना है, तो government has given at 50% concession if you are going for self development. Second thing is when the construction is going on by a builder, he has to pay land under construction tax, that is called LUC tax. वो अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट जाते हैं तो वो टैक्स आपको माफ है टू द सोसाइटी। देन देर इज एप्लीकेबिलिटी। अभी जो बैंक लोन का जो इश्यू था कि पहले मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक वाज ऑथोराइज्ड टू फंड सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू द सोसाइटी, फिर उसमें बहुत सारी दिक्कत आई थी, बीच में आरबीआई ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड देम, बट रिसेंटली सर्कुलर हैज बीन इश्यूड बाय आरबीआई themselves that all Maharashtra, all district cooperative banks and all state cooperative banks have been specially notified to please go ahead and do funding to self-development projects. Societies, we are coming forward for self-development. Please encourage them and do the funding. अभी ये फंडिंग का जीआर में जो लिखा है, इफ इम्प्लीमेंटेड है तो देर इज अ सब्सिडी रिबेट ऑफ 4%। जैसे कि अगर बैंक आपको 12% चार्ज करती है, यू आर एंटाइटल टू पे 8%, you pay to the bank 12%, 4% is reimbursed, going to be reimbursed by the government. That is one big interest is there. Second thing is आपको GST भी लगता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट इज विलिंग टू गिव यू कंसेशन। थर्डली, जो भी प्रीमियम आता है बीएमसी का, जो भी प्रीमियम आता है, I think I'm out of it. Or yeah, can you hear me?
Hello, can you hear me? Yes, sir, we Yes, can sir. hear you. Yes, sir. Go ahead, Yeah, please. so sorry. So जो भी प्रीमियम्स अपने को भरने को आता है, तो that also BMC is giving you 5 yearly equated installments. It's for self development. So concession in premiums, concession in TDR, concession in interest loan, and best is the extra FSI 10% that you're getting. So these are various benefits. लेकिन इतना बहुत पाने के लिए थोड़ा बहुत हमें थोड़ी मेहनत आगे करना है और एक स्टेप आगे जाना है. For which the main is the society has to be come together, be in harmony, and there are always few people who are taking interest. They are coming forward, so you have to trust them that they are taking the extra work ahead, and that is how they are going. अभी basically if these are the benefits of self development जो है, and as far as the funding and banking part, I will still come down. But before, I'll just tell you what is the basic procedure we have to follow, which is there for redevelopment also. But over here, as per MCX Act, someone has to make a requisition, 1/5 of the members to the society to please call for a resolution to pass a resolution for going for redevelopment. If redevelopment, whether to go for self development, yes or no. That is the first thing initiated. अभी इसमें ऐसा है कि दो गवर्नमेंट हैज गिवन, कोर्ट हैज आल्सो गिवन कि 51% कंसेंट इज इनफ, बट मोर द मेरियर and harmony has to be there because it is a once in a lifetime opportunity. Of course, few people would like to come up with objections, suggestions, and all that, but we have to attend to them in a very systematic and methodical manner. So the idea is what is the potential? आपका potential क्या है property का with the current DPs and all that. So if knowledge is short, it's very good to have a good consultant who will guide you, who will talk to anyone on your behalf. Okay, this is your potential, and this is what you can get, and this is what you can offer, and this is how you will get a project report has to be done in terms of feasibility. My plot is today 1000 square meter. तो टुडे वेदर एज पर द रोड विथ 9 मीटर का है, 12 मीटर का है, 18 मीटर का है, तो वो हिसाब से आई विल गेट 2.5, 2.7 और 3.3. सो वो अंडरस्टैंड होना जरूरी है. लेकिन उसके पहला टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टी कार्ड पे सोसाइटी का नाम होना बहुत बहुत जरूरी है, वेदर रीडेवलपमेंट करो या नहीं करो. बिकॉज व्हेन अगर आप कभी भी फ्लैट परचेस करते हैं, so you are purchasing the flat and becoming a member of the society. But till you don't have the ownership of the land appertaining to the building, it is very difficult. So this is the first step. Even if when you go to municipality for passing plans or कुछ भी करना है, तो टाइटल आपके लिए बहुत जरूरी है. रीडेवलपमेंट में जाओ या नहीं जाओ, सेल्फ डेवलपमेंट करो नहीं करो, बट टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर्टी कार्ड पे आपका नाम होना बहुत ही जरूरी है. So that only consultant can guide you. Okay, what are the papers required, what are the documents required, and then once you appoint a PMC, after the resolution is passed in the society, and once you get appoint an architect, okay, to give us, even the PMC can do a feasibility report. Okay, where do we stand today? अभी बहुत सारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि इवन वन FSI is not used, and there are many societies where 2 FSI is also used. So accordingly, where do you stand to gain what percentage of extra area you will get, and what percent of corpus you will get, because it is very very essential कि corpus होना जरूरी है. क्योंकि कॉर्पस से क्या होता है कि आपको होना चाहिए इतना कि आपको 10 साल का मेंटेनेंस आपके लिए प्रोविजन होना जरूरी है. दूसरा तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू सी. नाउ इट इज अप टू द सोसाइटी के जो कॉर्पस बेनिफिट हमें मिलता है, इधर यू डिवाइड अमंग योरसेल्फ और यू कीप इट विद द सोसाइटी फॉर 10 years. नाउ the best part of this is if you are retaining the profits out of self development, it is income tax free. But if you distribute among members, then you have to pay tax. But it is in the larger interest of running a society, of a maintenance free society, should be the aim and target. If that is the target, then sky is the limit for you. Then so these are the important
aspect of it. First, try to know where do we stand. And self-development may go now with the present government also is all out to again will come out and support. The resolution that was passed GR in September 2019, that we have to make a representation. We have already preparing on that. Please implement that GR which was done in 2019 to the fullest extent. The 10% FSI is one that covers your all your additional cost. Now अभी ऐसा है कि हाउ डू वी बैलेंस दिस प्रैक्टिकल क्या होता है कि पब्लिक मेंबर्स बोलते हैं वी आर सीनियर सिटीजन वी आर दिस वी डोंट हैव फंड्स वी कैन नॉट डू हाउ डू वी गेट इट हाउ डू वी व्हाट विल हैपन वो बिल्डर रहेगा तो ही विल टेक केयर ऑफ अस ही विल टेक केयर ऑफ द मनी एंड ऑल दैट बट टुडेस ट्रेंड इज आल्सो कि इनिशियली how do we work on that is basic issues. Two, three societies which I gave them a proposal was that when you are preparing for a self-development and after a feasibility report is made, so whether you are getting additional 40% area, 50% area, what corpus you are getting. So indirectly, if the builder is not there, that portion, component, even normally, if you are getting 3 FSI, the builder gets you 50% if you are occupying 1 FSI, and he retains that because he bears the cost of the premiums, he bears the cost of the construction area to be given. So that component may say initially once you get the feasibility report, for example, one society in Bandra, I proposed them they would get 55% area and 12 crores corpus. After, so what I suggested to them, the participation of the society members is very important. So how society members can involve themselves with more attraction to this. So I told them 10th, there is a rate of 40,000 rupees a square feet. I told them, hey, 10,000 square feet, because it was a 3,000 square foot plot, you sell it at half the rate. 20,000 में बेचो 10,000 you will sell because today if you go for redevelopment or you go for self development if you are moving out after the plan pass हो जाने के बाद अगर आप बाहर जाते हो alternate accommodation आपको 3 साल का रेंट लेके ही निकलना है बिकॉज हमको कोविड ने सिखा दिया कि रातों रात पूरी दुनिया बंद हो गई तो हाउ डू वी सर्वाइव एंड मेनी पीपल मस्ट हैव ये एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि क्या करेंगे कैसा करेंगे बट इफ यू हैव 3 months 3 years ऑफ रेंट आपके पास रहना चाहिए ये आपका फिजिबिलिटी में आना चाहिए तो वो हिसाब से हमने बोला ये बेच डालो और दैट 10 crores you will require for BMC plans passing and all that so you will be very comfortable अभी इसमें I said first preference is to all the existing members whoever wants take this square feet at this rate so this will invite participation members बोले कि हमको जो एडिशनल एरिया तो हमको फ्री मिलना है बट दिस इज एन एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी टू गेट more area at a discounted rate and especially in the project where I'm living. तो एक बॉन्डिंग आ जाता है मेंबर्स में पीपल फंडिंग इज इन्वॉल्व पीपल आर इन्वॉल्व एंड प्लस खुद का पैसा इधर लगा है तो दे विल ट्राई टू मेंटेन दैट यूनिटी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 90% 100% पार्टिसिपेशन का टारगेट होगा तो दिस इज हाउ इट कैन बी वर्कड आउट सो दिस इज वन वे ऑफ प्रोवाइडिंग फंडिंग दूसरा है कि वंस योर project is approved, plannings are approved, society has completed all the paperwork, then you can also tell members कि आज की तारीख में if you are getting 5-6% interest at fixed deposit bank, why don't you invest in this society only at interest or at the area. So there are various ways of funding or you can also initially rope in investors to bring in for which you can always make an agreement with them arrangement with them or sign documents but collectively it has to be done in a very very transparent manner with first preference to the existing members if they are exhausted of their requirement and still you need more money you go out to investors secondly more important what has happened is about the funding by the district banks the district cooperative banks and Maharashtra cooperative banks, they have been specially guided by RBI to go out and do funding for self-development of societies. Now this funding project, which includes, it is a 5-year funding project
wherein continuously bank will pump in funds as per the progress of the construction. But the best is even your 3 years or 4 years rent is also included in the project. So first 5 years, the bank will keep funding you. After the project is complete, you got 2 years moratorium, and then you get 10 years to repay that loan. But if your saleable component gets liquidated earlier, the better. So there are various supports now from the banking institutions also, from the government, and with present government, you will get more support. But the idea is you have to think and come collectively, okay, how will it happen? So for that, if you take advice of couple of people, consultant, existing projects, you can go and see how did they do this. So that is a very important aspect in terms of this. Main is you will have to do lot of time meeting your society members, discussing out with them, being more transparent in what you are thinking, what are their suggestions, and everyone has to give that support and that cooperation. So, as number of meetings you can do, you can take help of local people also. Second thing is, even if you buy one more house, now one income tax is there that normally for person के पास दो फ्लैट होता है, तो एक सेकेंड फ्लैट आप भाड़े पे दो या नहीं दो, उसका नॉशनल इनकम पे इनकम टैक्स वाज चार्जिंग यू इनकम टैक्स. सो वो हमने पुटअप किया था, एंड वो ऑप्शन भी अब निकल गया कि सेकेंड हाउस पे भी आपका जो अगर खाली रहता है और यू आर यूजिंग इट, यू डोंट हैव टू पे दैट इनकम टैक्स. दैट ऑल्सो गए बजट में इट वाज गिवन आउट. नाउ एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इज कि जो भी आप प्लान बनाएंगे तो हम सोसाइटी मिलके बनाएंगे, मिलके उसको अप्रूव करेंगे, मिलके कुछ चेंजेस करना है तो मिलके करेंगे. पहले क्या होता है, बिल्डर आपको कुछ दिखाया, बोला कुछ, बनाया कुछ. सो वो एक चीज हट जाती है विथ अ गुड कंसल्टेंट to be on your side always. So that planning can be helped. You can save on the rents also. You will go ahead and you have a collective bargaining. You can save on the rents also. Then there is always an issue of parking. Builder gives you parking, builder doesn't give you parking. So these are the benefits of self development. क्या है, एक हम हमारा घर है, हम अभी हमारा पूरा सोसाइटी हम बनाएंगे तो एक समझ के चलेंगे कि हम समझो एक सोसाइटी में 40 जन है तो 40 फैमिलीज का एक परिवार है. तो उसमें लॉट ऑफ ट्रस्ट फैक्टर हैज टू बी इंक्लूडेड. पीपल विद क्रेडेंशियल्स देयर हु कम फॉरवर्ड. और कितना भी करो, इट्स ऑलवेज 3-4 पीपल who are always doing the groundwork. They are doing the running about and all that. So it is very it has to be very transparent in terms of मेंबर्स आर देयर कि हम ये कर रहे हैं, ये हमारा ऑप्शन है, ये हमारे पास वेरियस ऑप्शन है, ये हमें करना है. एंड देन आई थिंक द मोर द मेरियर, यू विल गेट मोर स्ट्रेंथ इन हाउ यू विल कम आउट विद दैट. अभी रीडेवलपमेंट में होता है तो देयर कैन बी विद बिल्डर्स, दे विल नॉट पुट, इतना ध्यान नहीं देते, दूसरा प्रोजेक्ट लेने की उसमें देते हैं, फंडिंग इधर का उधर हो जाता है. ऑफ कोर्स the best is RERA is there. RERA has made good laws, rules, and regulations to be followed. But even in self-development, also RERA will come into the picture because you are having a saleable component. So एक जिम्मेदारी के साथ, responsibility के साथ कि first is no one is going out of the society till the plans are approved. अगर प्लान पास हो जाता है देन सी नॉर्मली जो मैंने इनिशियली कहा आपको कि कुछ स्क्वायर फीट जितना रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर आपका रेंट और आपका म्यूनसिपलिटी के लिए यूज, इफ यू सेल इट एंड देन कम्स वंस द प्लान आपके पास पास हो जाता है तो देर इज सेकेंड स्टेप इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन. नाउ इधर यू गेट good investors to buy your flat, or you have the contractors who also has made it as a business कि we will do the funding of the construction and against that वो लोग भी आपसे sellable units ले सकते हैं. So these are the major links to get connected, the initial funding for your plans to be passed and for your rent, because that is very important. Never go in for a rent for 1 year. Always have in your pocket
3 years rent, because that will make you life very comfortable. स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा कि कुछ भी होएगा, जैसे कोविड भी आया तो 2 साल में निकल गया। तो इसी तरह हमको समझना है, क्योंकि कल सुबह कुछ अनहोनी होती है तो मैं अपने घर में जहाँ पे अभी रहता हूँ वो एटलीस्ट आई नो 2-3 years आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई हाउस रेंट्स एंड ऑल दैट। प्लस इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, कन्वीनियंट फॉर यू। दूसरा है कि अभी जब हम कॉस्टिंग पूरा करेंगे, कॉस्टिंग आ जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जहाँ मेरा फ्लैट 40,000 का मार्केट रेट है, वो हमको 15,000 में पड़ता है, क्योंकि लैंड कॉस्ट आपको फ्री है। इट इज़ ओनली द TDR, द प्रीमियम्स और द कंस्ट्रक्शन। तो यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि जो बाकी का वॉट एवर अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर द एडिशनल एरिया कंस्ट्रक्शन एंड फॉर द सेलेबल का, इतना प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारा होता है तो हमारे को इतना माल बेचने को मिलता है। So if you can also come forward and decide to let us all contribute if possible, if possible. So then you get more area, more flats at a cost of the construction, which you can get it from the feasibility report. By a good feasibility report आपको मिलेगा कि अगर बिल्डर आएगा वो आपको 40% देगा या 30% देगा, लेकिन हम रीडेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे तो हमको एरिया भी 50% मिलेगा, कॉर्पस भी हमको ज़्यादा मिलेगा। तो यू गेट टू नो कि कॉस्टिंग क्या है हमारी, because land cost to a society as on date is zero. You have invested, you have paid, you have come into the society. So land cost zero hai, so then the cost is of the premiums to be paid to the municipality, the plans have to be passed, and the cost of construction. Abhi cost of construction may vary, in depends on the area or how lavish you want to make. So you can make for 3,000, you can make for 7,000, but in an area where even 40,000 का रेट चलता है तो उसको 6-7 हज़ार भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा, प्लस 3-4 हज़ार रुपये म्यूनसिपलिटी का भी लगा, तो देन ऑल्सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन टू फॉल बैक। तो 40,000 इज योर, से एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि सेलेबल एरिया है, बट योर कॉस्टिंग इज मच लेस देन हाफ इन गेटिंग इट डन। सो देर इज रेयर चांसेस, बिकॉज फंडिंग भी आपको उतना ही लेना है कि जितना आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए या प्रीमियम्स के लिए चाहिए और आपका रेंट के लिए चाहिए। तो दैट विल डेफिनेटली बी minimum less than half of what is the prevailing rates around. So it's not like you calculate के 40,000 into ये रेट मिलेगा, मुझे कितना पैसा लगेगा ये लेवल पे पहुंचने के लिए। पीपल प्लान पासिंग हो गया and the time is there to go out for 3 years, that time only people will feel कि भाई a lot of work has been done. So it is very important, but all resolutions जो भी हम decide करते हैं members, to maintain transparency, always call for a SGM as and when you require to get certain things approved, certain things passed. तो क्या होता है कि they will only help you in moving ahead कि भाई no, this committee or the redevelopment committee, whatever is formed, is they are helping us if they are doing the work, but at least they are keeping me updated by the day, by the hour के what is happening. अच्छा कुछ issue हो गया, कुछ problem हो गया, तो you can internally only resolve it. You can make, as it is provided in the September, yet you can make your own vigilance committee, 2 members of your society, and if you are taking bank finance, 1% of the bank, वो आपको प्रोजेक्ट मॉनिटर करेगा कि किधर सही जा रहा है, कुछ गलत हो रहा है, बट विद इन योर सेल्फ ओनली यू कैन कम एंड सिट एंड रिजॉल्व। बिल्डर आ गया तो बिल्डर हैज वन स्टेयर ओनली, मानो या न मानो मैं चला कोर्ट में, एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। सो एज फार एज प्रॉब्लम है कि हम हमारे घर में पहला हम प्रॉब्लम हमारा कुछ अगर होता है तो, बट अगर एवरी स्टेज इज अप्रूवल आप लेते हो within the members, from the members, keeping them informed, that transparency है, तो बहुत कम चांसेस हो गए कि आपके बीच में कुछ तनाव होएगा, कुछ मनभेद होएगा या कुछ तकलीफ आएगी। तो it is very important as far as that. Keep meeting people, that is very important. Networking very important. आपके लोकल जो भी कॉर्पोरेटर रहते हैं वो रहते हैं, उनको भी आप जरूर पड़े तो you can take his assistance, his help wherever you want, as far as the government issues are also concerned. So it is what, with what approach you take, how you approach is very important. दूसरा है जो मैं 1 second बोलूँगा कि even what, because ultimately when you do self development you will end up with a profit. Okay, प्रॉफिट में आपका एरिया हो जाएगा, कॉर्पस हो जाएगा, एंड दैट यू रिटेन फॉर द सोसाइटी, इट इज इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट इज ऑल आउट with the open hands
in terms of benefits of FSI, interest subsidy, income tax maaf, payment premium, 5-year installment. Banking is giving you so much of leverage. Okay, by first 5 years they will keep pumping money as per the schedule of slabs of completion and all that. Then you get almost all that chance. And I think by the time you complete the construction, I am sure there won't be any problem of sales, or you can bring out the sales value to the extent of you getting your house, your corpus, and you decide on the rate you want to give it out. So these are the basic, like self development is my passion. So I have been promulgating that from 2019. Even in one of the societies I stay, U1 apartments at Bandra. So there also we are going for self development. We have 6-7 builders in that, but we decided to go for self development, and we decided to go for a area which is we are getting almost because of the land portion is big. We have the ground area. There we are almost getting one flat free for every one flat with a crore, 100 crores corpus. But that may be not be the possible everywhere. But because it is the rate, same if you go up western suburb where the rate, it all depends on the prevailing market rate, and then you make your best decision. But definitely, self development is the need of the hour. Self development gives you more area, it gives you more corpus, which you can either divide, you can retain in the society, some you may distribute. So, and plus, it is your own as a project. Today, I always tell in my society also कि कोविड ने सबको डसा है, सबको दिया है. तो अभी अगले साल अभी हम मेहनत करेंगे, तो ये कोविड का नुकसान निकालने के लिए आप सेल्फ डेवलपमेंट में थोड़ा अपना टाइम दो, अपना कंट्रीब्यूशन दो, एंड आई थिंक वी विल ऑल बी अ हैप्पी पीपल. प्रॉब्लम आता है मेनी सोसाइटीज में वे देयर आर मोर ऑफ सीनियर सिटीजन ना देयर हु जो मन में डर रहता है कि किधर अटक गए हम तो क्या. So for that, if you have a good consultant who will always keep you कि भाई before you are going out for 3 years, आप 3 साल का रेंट लेके जाओ, आप ये म्यूनसिपैलिटी का प्लान पास हो गया, आप देखो, आप ओके करो. तो देर इज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट यू जनरेट विद इन योर सेल्फ कि भाई यू आर डूइंग समथिंग एज योर ओन. आपका ओन एक बेबी समझ के आप उसको करेंगे, तो इट विल बी रियली नाइस. एंड ऑफ कोर्स यू हैव योर नेक्स्ट जनरेशन हु विल ऑलवेज बी देर कि आप उनके लिए कर रहे हो ऐसा समझ के चलो. लेकिन आप अगर सीनियर्स है तो आपने दुनिया देखी है, तो यू नो कि क्या है क्या नहीं, व्हाट इज अप्स एंड डाउन, व्हाट इज नॉट डन एंड व्हाट कैन बी डन. बट the basic factor is the trust you have to generate within the members. Okay, look, we are here for a good cause, and let us try to implement. Of course, the professionals will be appointed. You appoint professionals also through a very transparent process in whom to appoint. Everyone will say, I know someone, I know someone. Let everyone come forward. Let everyone say, let everyone do this. Let everyone discuss on any one you want to choose, any architects you want to choose. Take all the references possible कि कैसा करना, क्या करना. बट थोड़ा हट के आपको टाइम आपका देना पड़ेगा. इफ लाइफ में इफ यू वांट समथिंग बेटर टू हैपन, you have to come forward and give little more time. Of course, ultimately there will be a few 10-20% people who will take that initiative and come forward where they feel कि okay, by doing this हमें तो अच्छा होता है, लेकिन हमारे फैमिली होती है सोसाइटी, उसका भी भला होता है. तो लुक आउट फॉर सच पीपल who want to come up, who want to give us this help. And I think the benefits are tremendous. Municipality has never given such benefits of equated installment. तो वो एक तरीके से एक लोन ही हो गया कि आपको 5 साल में भरना है जो प्रीमियम भरना है. तो ये एक बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है. इनडायरेक्टली वो आपका फंडिंग हो गया. खाली आपको प्रॉब्लम है फर्स्ट माइल का कि हमें प्लान पास तक करने का जो कॉस्ट है वो कितना असर्टन करना और उसको किस तरह एमिकेबली सॉल्व करना. हो सकता है कुछ मेंबर्स आपकी सोसाइटी में आवे, दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे से ओके आई एम इन्वेस्टिंग. बट an investor will always feel comfortable once he is assured that by all paperwork has been completed, all society has done followed, that there is no scope that we did not do this,
or we just took this decision without informing the members. So ये प्रोसीजर फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है, and it is always better to come forward and follow this procedure. So that will be there. थोड़ा टाइम आपको देना है और थोड़ा हिम्मत देना है, and once if you get a couple of good consultants by the way with your way, then definitely you can come out, because government is there to support you, municipality is there to support you, income tax is giving you all the support. So I think this opportunity can be explored. पूछने में हर्ज नहीं है, ट्राई करने में हर्ज नहीं है, और एक असेसमेंट करना चाहिए कि अल्टीमेटली हमें क्या करना चाहिए, और प्लस इट ऑल डिपेंड्स हाउ अर्जेंट इट इज फॉर योर बिल्डिंग, हाउ डिलेबरेटेड योर बिल्डिंग इज. उसको मेजर रिपेयर का जरूर है कि वी स्टिल हैव टाइम टू रीथिंक more about it, and so that is how this is what I have to say. And I think if there's anyone will take question answers and try to resolve whatever is there. Thank you, Mr. Jivani. Yeah. Just hold on, please. Just hold on. Everybody, please hold on. So can I? There are 1 minute, please. We'll call. Just hold on, please, for a moment. मिस्टर जीवानी, कुछ खुलासा करिए आपके टॉपिक में. थोड़ा सा 2-4 पॉइंट है, जैसे कि 2-4 सोसाइटी एक ही प्लॉट पे, ओके, प्लॉट ऑफ लैंड में, लेआउट प्लॉट में 2-4 सोसाइटी है, तो कैन दे डू सेल्फ रीडेवलपमेंट बाय म्यूचुअल कंसेंट? यस डेफिनेटली. इफ आई अंडरस्टैंड आपके क्वेश्चन से कि प्लॉट एक है और उसमें 4-5 सोसाइटीज है, राइट? तो सोसाइटीज कैन कम टूगेदर, form a consortium, and we can jointly go for self development, because that will if 2-3 societies are coming, it is be much better, because then you can plan. Say high rise building agar aap plan karte to you get more open space, more garden, more facilities can be, the more you go, and you have the advantage of parking. You can go basement parking also, you can have 3-4-5 floors parking also. So it is possible for the societies. You all can make a consortium of representative of each of society का एक group representative बना के they keep forward, and they can approach, since the layout of the plot एक ही रहेगा आपको. So there are societies I have come across where there are 6 and 7 societies are there. One is in Dharavi also there. So they have come up together and going ahead jointly. सर जी, नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज ए प्राइवेट लेआउट प्लॉट. ओके, अभी सरकार ने कुछ प्रोविजंस किया है क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए, ओके, प्लॉट के एरिया के ऊपर. हाँ, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे कि क्लस्टर रीडेवलपमेंट अगर करना है तो कितना बड़ा प्लॉट होना चाहिए? ओके. तो जिसमें क्लस्टर के क्लस्टर लिए अगर रीडेवलपमेंट और उस पे जो एप्लीकेबल एनहांस्ड एफएसआई जो मिल सकता है. Okay. Cluster development is divided into the island city, which starts from Mahim to Kaf Parade, and western suburb starts from Bandra to north till Mira Road and all that. So if there's a cluster, so if it's island city, you require 4,000 square meters ka plot combined. Okay. And which there are efforts to bring it down to 2,000, and same suburbs is also there. So suburbs they want it should be 6,000 square meters. So there also efforts are being put. Even if it's 4,000 square meters, so cluster redevelopment is done, for which government is also very keen on that. And if you do cluster, you get 10% FSI minimum as extra on the permissible FSI. फॉर रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट, उसमें मेंबरों के कितने कंसेंट है, क्या पैरामीटर्स है, उस See, पे थोड़ा सा रोशनी if डालिए it's सर जी. as far as consent is concerned, so normally if it is for self-development, whenever you call a special general body meeting, you must have 75% of the members to attend that meeting. Okay, जैसे कि अभी समझो 100 members की सोसाइटी है तो 75 का प्रेजेंट होना जरूरी है, और उसमें से अगर 75 में से 51% ऑफ 100% का कंसेंट होना जरूरी है. तो अगर 75 मेंबर्स आए हैं तो 75 मेंबर्स का 51% नहीं, 51% ऑफ 100 मेंबर्स. तो अगर 75 मीटिंग में अटेंड करते हैं
एटलीस्ट 51% शुड गिव कंसेंट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, अभी कई सोसाइटियों में ऐसा भी प्रपोजल है, जैसे मेरी जानकारी में आया हुआ है कि सोसाइटी के मेंबर्स हैं, बोलते हैं हम लोग सेल्फ फंडिंग करेंगे, हाँ, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। well, as I said, self-funding is the best option. Okay, where members who have surplus fund, so they should be assured कि भाई हम लोग सब पेपर वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे, we'll obey all the rules and guidelines. तो self funding में is the best option because then you get the option to buy more of your own सोसाइटी, बिकॉज द कॉस्टिंग यू विल गेट टू नो फ्रॉम अ गुड कंसल्टेंट कि भाई आपका भाई 40,000 का रेट है, लेकिन आपको कॉस्टिंग तो 15 से 18,000 ही पड़ता है। तो अगर सब बोलते हैं कि अगर 18,000 में बनता है तो हम ही पूरा पूरा कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करें, तो उसमें आपको सेल्फ फंडिंग करो। उसमें आपको अगर लोन लेना है तो आप लोन भी ले सकते हो, एंड म्यूनसिपलिटी इज गिविंग यू जो प्रीमियम्स का जो 5 ईयर का ईएमआई देते हैं, तो दैट इज एन एडिशनल बेनिफिट। तो अगर सेल्फ फंडिंग तो इज द बेस्ट बिकॉज दैट विल गिव यू अ लार्जर एरिया, लार्जर कॉर्पस। ओके सर, नाउ जैसे अभी एक बिल्डिंग है पुरानी 50 बरस की, लेकिन सिर्फ रेसिडेंशियल है, ओके, तो कैन ड्यूरिंग सेल्फ रीडेवलपमेंट और ड्यूरिंग नॉर्मल रीडेवलपमेंट हाँ, कैन इट बी रेसिडेंशियल कम कमर्शियल कम ऑफिस स्पेस वगैरह वगैरह, इज इट yes, पॉसिबल? yes, any as per the new DCR, any area declared as R zone, that is residential zone, but it is if it is touching road where minimum I think ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एज कमर्शियल, शॉपिंग एंड ऑफिस, और उसका प्रोपोर्शनेटली आपको अप टू 5 FSI आपको मिलता है फॉर कमर्शियल। ओके, so that ओके, is the biggest advantage because that will cover all your costing also, and you bring down your costing heavily down because commercial shops आप बेचेंगे या तो मेंबर्स आप खरीद लेंगे, उस ऑफिस करके यू कैन पुट अ रेसिडेंशियल टावर, सो दैट इज एब्सोल्युटली अलाउड इन द न्यू DCR। so do you advise in a residential building हाँ, during the self redevelopment the या member should actively think about commercial aspect also in that commercial, uh, if okay, so that कमर्शियल, the higher FSI is derived and higher revenue is also generated. वेल मेंबर्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि देखो ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, तो अगर हम इसको कमर्शियल एंगल भी यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस, तो हमको इसका एडवांटेजेस, मॉनिटरी एडवांटेजेस अ लॉट। सो इफ दे आर कन्विंस कि भाई नहीं लेट अस, क्योंकि आपका ये सोसाइटी रोड टच होएगा, कमर्शियल रोड होएगा तो ही कमर्शियल का मीनिंग रहता है। इनसाइड अगर होएगा तो कोई कमर्शियल का कोई वैल्यू नहीं रहता है, बट इफ इट इज रोड टचिंग एंड ऑल, so it is very essential and advisable to go for the commercial angle also, explore that angle also, which will clear all your headaches also in terms of funding also. So sir, you are confirming that if it is a residential society of let us say 100 flats originally, Correct. and if the member say कि चलो ठीक है हम लोग कमर्शियल कर लेते हैं क्योंकि उसके Yes. अंदर रिटर्न्स भी ज्यादा आएगा, एफएसआई Yeah. कमर्शियलाइज रेट पे मिलेगा हमें, और Right. हमें खुद का फंडिंग या बैंक से लोन लेने की भी आवश्यकता कम से कम पड़ेगी, Okay. इज इट एडवाइजेबल? वेरी मच एडवाइजेबल, क्योंकि इसमें जैसा है कि जितने मैक्सिमम मेंबर्स इफ दे पुट कंट्रीब्यूट व्हाट एवर मनी दे पुट, तो एक ओनरशिप हो जाता है ना कि मेरा प्रोजेक्ट है, मेरी बिल्डिंग है, मेरा घर है, तो उसमें यूनिटी बहुत जरूरी, जो इम्पोर्टेंट है वो बरकरार रहेगी, सबका पैसा लगेला रहेगा, तो नो वन कोई डिस्ट्रक्टिव बात या ऐसा नहीं करेगा, एवरीवन आर्ग्यूमेंट्स विल बी देयर, डिस्कशन, बट इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो खुद का फंडिंग करके करते हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग टुडेज। सर एक प्रश्न ये आता है कई लोगों के बीच में कि मेरे हाँ, सोसाइटी में कन्वेंस हुआ नहीं, मेरा नाम प्रॉपर्टी कार्ड पे नहीं है, ओके, लेकिन ख्यालात आ जाते हैं, ख्वाहिश आ जाती है कि अभी हमें रीडेवलपमेंट करना है। अब यस, मुद्दा ये है कि कन्वेंस हुआ नहीं है लेकिन हाँ, रीडेवलपमेंट करना है, इज इट ओके। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इफ पॉसिबल कैसे करना है, थोड़ा रोशनी डालिए सर उस या पर। अभी जैसे कि ये मेजर प्रॉब्लम बहुत सारे सोसाइटी में है कि बिल्डर ने बिल्ड करके चले गया लेकिन सोसाइटी को कन्वेंस नहीं दिया। उसमें उसका वेस्टेड इंटरेस्ट एक रहता है कि कल सुबह एडिशनल एरिया मिलेगी, तो अगर मैंने कन्वेंस नहीं किया है
तो मुझे वही एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर सोसाइटी बन गई, बिल्डिंग बन गई, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया, तो बिल्डर का हक जीरो हो जाता है। देन ऑल बिलोंग्स टू द सोसाइटी एंड सोसाइटी शुड ट्राई टू अप्रोच एंड गेट द कन्वेंस फ्रॉम द बिल्डर। लेकिन अगर बिल्डर ना बोलता है, बट इफ यू हैव अ सोसाइटी, इफ यू हैव अ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, देन यू आर एंटाइटल टू कन्वेंस विच इज कॉल्ड, अभी जो गवर्नमेंट ने निकाला है डीम्ड कन्वेंस कहते हैं, कि वेर इन इट इज अ प्रोसीजर, सिंपल इज टू make an first write to him, give him notice. If he doesn't respond, then जैसे कि सोसाइटीज का एक रहता है डेप्यूटी रजिस्टर और उसके ऊपर रहता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर। सो विद द फॉर्म 7 भर के देयर इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, विद दैट यू अप्रोच द district deputy register. This is a society, these are the list of members, and we all members have a registered document, and builder is not cooperating, kindly call for a hearing. So there is a maximum period given to district register के within 6 months आपका फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन विद इन 6 months आपका ऑर्डर मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर का टू कैरी आउट द कन्वेंस। ओके, नाउ सिंस द फ्लैट owners have paid all the balance, that is one requirement, so all the flats have to be registered and stamp duty paid. If not, then they have to do it. अगर जुलाई में एमनेस्टी आता है तो you should take advantage of that. So if all the flats are registered, stamp duty paid, then conveyance कराने के लिए stamp duty is only 100 rupees. So when a district register will pass an order, a conveyance has to be granted, and then he is authorized to come to the register and sign and register on behalf of the builder. It is very good provisions made by the government to help us out, because there are so many societies stuck with this. So this is the best method to go. Approach the builder, give him a notice, and still he doesn't respond. If something happens to the building, your money is gone because you have not bought the land. Therefore, the land is in your name, not named. So then you lose all. So land के साथ होना बहुत जरूरी है। तो all the land appertaining to the building, जैसे बहुत सारे एक प्लॉट में ऐसा है कि एक बिल्डिंग बन गई, उसका सोसाइटी रजिस्टर हो गया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बिल्डर को दूसरा बिल्डिंग बनाना है, फॉर वॉट एवर रीजन उसका स्टक हो गया, बट योर बिल्डिंग वॉज पास्ड। फ्रॉम द बिल्डिंग प्लान यू गेट टू नो व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लॉट यूज्ड फॉर योर बिल्डिंग। उतना प्लॉट का एरिया का आपको कन्वेंस मिलना ही है। देयर इज नो वो टाइम गया, टाइम पास हो रहा है, ये हो रहा है, बिल्डर ने ये किया, वो मैनेज किया, ऐसा कुछ नहीं। इट इज़ वेरी पर्टिकुलर, वेरी स्ट्रिक्ट। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर हैज़ टू ऑर्डर, give the order of deemed conveyance, provided all your documents have to be completed, but the main thing is all flats have to be registered and stamp duty paid. And if it is Okay, not Mr. there, Divani, thank you very much for your lecture. It was very knowledgeable. You have shared your experiences. thank you. With your permission, we will take up questions from our participants. Okay, yeah. Okay, first, Mr. Satyanarayan Gaur, you had a question. हाँ सर। सर Yes, ये sir. काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव ये था। ये सर मेरा अपना एक मानना है कि ये थियोरेटिकली अपने मुझे लगता है कि हमने अचीव कर लिया, समझ लिया करके, हाँ, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जाते हैं हाँ, तो एक डर निर्माण हो जाता है, खौफ लगने लग जाता है। म्हाड़ा की सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि म्हाड़ा को प्रीमियम देना पड़ता है, और हाँ, मुंबई के अंदर 50-60% जो सोसाइटी है, कम से कम 20-30 हज़ार, वो मिडिल क्लास लेवल वालों की है। करेक्ट, उनको 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया देना मतलब एक खौफ का निर्माण हो जाता है, और बोलते हैं करेक्ट, इस डर से अच्छा तो ये कि हम प्राइवेट बिल्डर को ही दे दें करके। बराबर है। और बैंक वाले जो हैं वो बोलते हैं भैया आईओडी ले आओ और उसके बाद में हम देते हैं आपको लोन। बराबर है। तो ये जो गैप है ना, हाँ, इस गैप में कोई एश्योर्ड ऐसा कुछ समझ इक्वेशन है क्या कि आईओडी का टेंशन भी मेंबरों को नहीं आए करेक्ट, और ये अपना सेल्फ रिडेवलपमेंट सक्सेसफुली ये हो जाए, Correct. अपन उसमें प्रोसीड कर पाए। ये एक छोटा सा सवाल है मेरा। Okay. इसके अलावा
या तो इसका जवाब मिल जाए, फिर सेकंड में पूछ लूँ आपको कि ओके कई सोसाइटी जो होती है उसमें रेसिडेंट्स भी होते हैं और जी शॉपकीपर्स भी होते हैं। मिस्टर हाँ जी, सत्यनारायण, यस सर, आप यस सर। अपना पूरा एक प्रश्न का जवाब सुन हाँ, लीजिए, ठीक है फिर सर, ठीक है सेकंड कर सर। राइट लीजिए। लेट अस सर, नॉट राइट कंफ्यूज एनीबडी, सर। या हमारी बाकी भी पार्टिसिपेंट्स है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सर्टेनली, सर्टेनली। ओके। सो आपका जो सवाल था कि जो इनिशियल जो फंडिंग होता है वो यस सर। बराबर है कि हाँ, वो एक एरिया रहता है कि वो फंड्स हम कैसा जनरेट करेंगे, बराबर है। तो हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि उसके लिए पहला आपका एक टाइम असर्टन होना चाहिए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंडिंग यू विल रिक्वायर टिल द बिल्डिंग्स प्लान्स आर पास। ओके। राइट सर। और दूसरा है कि जैसा बिल्डिंग का प्लान पास होता है तो आपके पास उसका रेंट भी 3 साल का होना चाहिए। अभी यस सर। इसमें ऐसा है, जैसे मैं मानता हूँ कि जो सेल्फ डेवलपमेंट का जो बेनिफिट्स बहुत अनेक है, तो उसको ऐसा थोड़ा बहुत मैन्युपुलेट तो नहीं बोलूँगा कि आप सेल्फ हाँ, डेवलपमेंट भी करते हो एंड हाँ, यू हैव अ बिल्डर हु विल डू द एक्सपर्टीज of executing the project. Okay, but every sale is happening in your name, every money is coming to you, but a development management model बोलते हैं which is getting popular कि भाई अब बिल्डर हैज इज एक्सपर्टीज, उसको मालूम है म्यूनसिपैलिटी में किधर जाना, क्या करना, किसके पास जाना, कैसा करना, वो करना। तो यू कैन टाई अप विथ हिम फॉर अ परसेंटेज ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ओके। नाउ वंस इफ ही इज कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग, तो मैंने आपको दो बताया कि इनिशियल फंडिंग के लिए उसके लिए पहला आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर यू गोइंग टू गेट एंड व्हाट एरिया यू आर हैप्पी विथ एंड व्हाट इज द कॉर्पस आपको चाहिए। वो हिसाब से आप XYZ माल जो है, आप अगर, क्योंकि ये पेपर वर्क है, पेपर वर्क करने तक का यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंस। वंस जब पेपर वर्क हो गया कि भाई चलो हम 10,000 फुट है, इसमें से अगर इफ इज अ बिगर प्लॉट हम ये 50% में देने को तैयार है टू इन्वेस्टर्स, तो देन and then that you offer to your members. If not, then outside will definitely come and take that advantage. बट उसके लिए एक ही चीज़ है कि आप पेपर वर्क सोसाइटी का पूरा कंप्लीट करो इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन पास, कंसेंट पास, एंड तो देर इज नथिंग के समवन आउट ऑफ द ब्लू समटाइम्स के हम फ्रॉम द सोसाइटी ने मुझे ये नहीं करना है, मुझे नहीं है, आई हैव गो टू कोर्ट एंड ऑल दैट, वो सब नहीं होना चाहिए। वंस एमिकेबली अगर सब सेट आउट होता है, देन इन्वेस्टर्स कैन कम टू एट अ डिस्काउंट, और you have a barter system with either the contractor or with the development management model, where then he would come up, he would help you with the sales, he will help you with the construction, he will help you with the construction and the contractor also. So that initial funding is one which we have to be very thoughtful and calculating. जैसे मैं बोला कि अगर आपका पेपर वर्क सोसाइटी से कंप्लीट हो जाता है, तो देन पीपल फ्रॉम द सोसाइटी ओनली विल कैन इन्वेस्ट कि भाई मेरा राइट। बैंक में फिक्स डिपॉजिट पड़ा है तो मैं 5% भरता हूँ, मेरे को सोसाइटी 10% देती है। तो देर देर आर वेरियस फंडिंग मेथड्स कैन बी अचीव्ड एंड विच विल गिव गुड रिजल्ट्स। ठीक है सर, मैं समझ गया। एज्यूमिंग या दैट कि सब कुछ फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हाँ जहाँ पे म्हाड़ा का डिमांड आ जाता है कि 5 करोड़ रुपया भरो, तो हाँ वहाँ पे जैसे आप बता रहे हो कि बिल्डर इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन इन्वेस्टर, राइट? ये यस। एक तरीका हो सकता है अभी ना? देखो जैसे 5 साल है ना, तो वी कैन गेट इट डन कि भाई हम ये जो प्रीमियम आपको भरना है वो हम आपको 5 साल में भरेंगे। राइट सर, हाँ वो तो है, आपका सीधा प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाता 20% है। पे आ जाता है, एंड दैट दे विल अग्री। इन सर्टेन केसेस तो गवर्नमेंट हैज इवन टेकन मॉर्गेज ऑफ फ्लैट्स फॉर नॉट पेइंग प्रीमियम, यानी उनको रिलैक्सेशन दिया है। सो देर इज गवर्नमेंट नाउ विथ पॉजिटिव के भाई हाउसिंग इज द नीड ऑफ द आवर एंड वी नीड पीपल्स हैप्पीनेस एंड ऑल दैट। सो वो 5 साल भी आपका उधर टूट जाता है, तो उधर बहुत सारा बेनिफिट होता है, तो आपको एनकरेजमेंट मिलता है दैट वे। ठीक, ठीक, राइट सर। थैंक यू सेकेंडली मिस्टर सर, सत्यनारायण। हाँ जी, और कोई प्रश्न है आपका नहीं, हाँ मेरे मिस्टर? पास में है, और एक छोटा कॉमन प्रॉब्लम्स है कि ठीक है सर, कई एक पूछिए। सोसाइटी होती है जिसके अंदर रेसिडेंट मेंबर्स भी होते हैं और शॉपकीपर्स भी होते हैं। हाँ अब हम आते हैं कि सेल्फ रिडेवलपमेंट के अंदर हमने 50% सबको एक्स्ट्रा मिल रहा है करके, तो करेक्ट रेसिडेंट मेंबर्स को तो अप्रोप्रिएट कर सकते हैं अपन, क्योंकि स्काई इज द लिमिट। लेकिन करेक्ट शॉपकीपर्स जो है वो 50% 60% मांगते हैं। आप लोग हाँ जितना लेते हो उतना हमको मिलना चाहिए, और यहाँ पे बराबर आता है प्लॉट का कंस्ट्रेंट्स। करेक्ट। इसको कैसे कर सकते हैं हम?
अभी देखो जो कॉमन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि समझो एक सोसाइटी है जिधर समझो 6-7 शॉप्स है, बराबर है। नाउ अगर ये जूनी बिल्डिंग है तो ओपन स्पेस कम छोड़ा होगा दोनों साइड पे। अब जब नया नया रूल से जाएगा तो जैसे फायर ऑफिसर है, फायर पॉलिसीज बिकम वेरी स्ट्रिक्टर इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ओनली, कि अगर मेरा सीढ़ी बम्बा पूरा बिल्डिंग में घूमेगा नहीं तब तक फायर एनओसी वाला एनओसी नहीं देगा, बिकॉज इट इज इन आवर सेफ्टी ओनली। तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा कि जो 7 शॉप्स इज रनिंग से ओवर 300 मीटर्स, तो कीपिंग ओपन स्पेस वो 300 मीटर्स हो जाएगा 250 मीटर्स। सो वन वे वी हैव टू कन्विंस देम कि भाई तुम्हारा शॉप का फ्रंटेज थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट यू कैन पुश हिम अप बैक, वो एरिया आप पीछे एडजस्ट कर सकते हो। एंड इफ योर फिजिबिलिटी इज परमिटिंग देन यू कैन कॉपरेट बाय ग्राउंड प्लस फर्स्ट ले लो और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि भाई यू गो बैक और यू कम अप वर्टिकली, थोड़ा ऊपर आप ले लो। जैसे कि देयर आर इंस्टेंसेस वेयर यू गेट हाइट ऑफ 14, and then I think recently in a project in Kalyan we got a 22 feet height. So that way you can keep them happy कि भाई this is how we can satisfy your needs also. You have to go back and go higher that way. So if they are getting win-win situation, so I think that is how they also feel कि no, I am also getting something that way. So this is how you can convince. तो आपको 50% मिलता है तो उसको बोल तो 50 न भी मिले तो उसको 25-30 भी मिलेगा, तो he'll be happy with the hike that municipality is now giving. राइट सर, थैंक यू सर। सेकेंडली, ये जो अपन ने बात करते टाइम पे कि प्रॉफिट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी रिटेन्ड बाय द सोसाइटी इटसेल्फ, तो इसके अंदर जब सेलेबल विंग वाले मेंबर्स आएंगे तो दैट विल बी एंजॉयड बाय देम आल्सो। No, you have to be very clear. It's a very good and valid question. ये सवाल मुझे बहुत सारा सोसाइटीज में आएगा। So this profit belongs to the original members. Okay. So you have to be very clear कि भाई with this money we are retaining in the society, it will be used towards for our maintenance. For the saleable component who comes, he has to pay because उसका rate भी अलग रहेगा maintenance का, because redevelopment rehab gets benefit from municipality also in terms of increase, but the saleable component will be more. So you have to be very clear whenever you're selling the flats कि भाई your maintenance will be higher, and from this corpus you have nothing to take. This all belongs to the existing members. राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। हो गया। थैंक यू मिस्टर सत्यम। Okay. Anybody has any other questions? No. Mr. Vikrant Jindal. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, अभी जब भी आपने बताया कि we have to be very clear with the new members and the existing members. Does the society will later on be permitted that we have two sets of maintenance collection? Existing original members, those who are counted for self-development, they are paying less maintenance, and the other members, new members, are paying more maintenance. Will the bylaws or the MCs Act will permit that we have two sets of collection or two different type of collection? See, okay, I'll answer that. If you see the bylaws, okay, anything, whatever you want to do, whatever you want to approve, you have to get it passed in a resolution in the annual general body meeting. Now, there are recent court judgments which says that decision of the AGM is binding on the minority also. So even court suggests that, like, if you see in redevelopment, there is a guidelines from the government called 79A, wherein they have stipulated certain conditions and all that. But there is a recent judgment of May 2021. If the society is able to pass a resolution in majority, then the guidelines of 79A is also mandatory. It is not compulsory to follow. So what judge is saying, as far as the members are happy with what they want to do, so their decision is of prime importance to them rather than the rules also. So that way you can very well be clear in that aspect, and you can pass a resolution in the AGM if this is how we will go ahead. And before you make a sale to anyone, you have to expressly tell him, okay, by this is the money what you are going to get is not going to be yours, and your maintenance will be different because rehab component maintenance will be different. So it's better is you explicitly tell them, because once they
purchase the flat and then you tell him, so it leads to arguments. तो पहले से बोल के दे देना कि भाई ये तुमको नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा रहेगा, क्योंकि ये म्यूनसिपैलिटी ने आपको देगी कि रीसेल कंपोनेंट का ये मेंटेनेंस रहेगा, प्रॉपर्टी कार्ड का, टैक्सेस एंड ऑल दैट आपका ये रहेगा. Thank you, Mr. Vikrant. Mr. Dharmesh Joshi, you wanted to ask something? Sir, yes. Thank you so much. Giovanni sir, thank you for Mr. Rajesh, I'll come back to you. Thank you. My question is, suppose if a housing society is on a leased plot, Okay. and the lessor is not yet ready to release the plot to freehold. Okay. A showstopper for the society members to go for self-redevelopment? That is my question. Now, lesser who is there is of importance, whether it is government who has leased the property or a private person is there. It's a private charitable trust, sir. Private charitable trust. Okay. So, you need an NOC from them. Okay. You need an NOC from that charitable trust that we are going for redevelopment, self-development. And in return, they may ask you for some benefits or whatever they want. So then you'll have to comply with that so that it is amicably resolved. जैसे चूनाभट्टी and all, there are Wadia trust. Okay, there is got a lot of properties, but people, society do appear them, and they, for a small consideration or whatever it is, they do give NOC. Because and of course, if your building is gone dilapidated and all that, so then municipality also steps in to help you out. That right, way. sir. And I believe these will be entirely mutual consents, and Yeah, there are no norms as such specified. Right? Yeah. Thank you, sir. Yeah. Mr. Rajesh? Yes. I wanted to know about the documentation where the conveyance duty is not complete. You said that the flats who have the stamp duty paid, Yeah. they can go in to the collectors and they can approach the government with the 63 and 60s. Okay. There was no stamp duty at that time. And old owners are still occupying those flats. So old owners, they may not be having those documents, stamp duty and all those things, or even registered agreements. So what is the way out for that? Is there any way out for them? See, one good advantage is in July you will get an amnesty. So where I think if it is, there is a rule that any agreement made before 1978. So the stamp duty has 1978. So stamp duty has to be paid as per the value in the agreement. जैसे कि अभी 65 में आपने 20,000 का लिया तो आपको 20,000 का स्टैम्प ड्यूटी भर के आपको चैप्टर क्लोज कर सकते हैं एंड पेनल्टी इज वेव्ड दैट वे. So that is how you can come back to the scenario and solve this area. Okay, but अभी जो amnesty आया है recently जो आया है, it only dealt with pending cases. जो pending cases थे, उस पे जो मार्च से पहले जो disputes थे, उस पे आया amnesty. Now you are speaking of something fresh coming in July? Yeah, fresh is coming in July. Okay. And 65 will not have a much problem. It is only like societies which have come up in 80, 85, 90 and have not paid the stamp duty and not got registered. So the problem more is with them. Okay. Yeah. Because registration was compulsory, not compulsory prior to 94, but stamp duty was there. But there is a recent judgment also that the stamp duty cannot be applied with retrospective effect on all the documents if it is not applied. Only on the last agreement. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, Mr. Rajesh. Mr. Girish Kale, are you there? Mr. Girish Kale? Okay. Yeah, I have whatever the profit society earn in redevelopment that will go to purpose fund towards the maintenance. But can we charge maintenance for the new incoming society members or those I can't hear. sold the flat? Hello.
Yeah, can you repeat the question? It was very low. Hemanji, if you can help me, what was the question? His audio is not proper. थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए काले साहब. My question is, uh, any society which go for redevelopment, self-redevelopment, they earn the profit, right? That profit will go towards the corpus maintenance. There's a lot of disturbance from rehabilitated flats, the redeveloped flats. So there will be a difference in the taxation for which you have to maintain it. The maintenance component in terms of saleable component. Okay, but I am only talking about the maintenance charge, not the profit. Yeah, to maintenance you can charge them if you want to charge, and if you still want to retain this money corpus in your bank account, you can still do that. But that you can take a collective decision from the society in an AGM whether to use this money for maintenance or whether we should keep collecting and keep that as an emergency funding or whatever it is. Okay. That is Okay, your thanks. fund, you can distribute, use it the way you want to. Okay. Mr. Dinkar. Am I audible, sir? Yeah, yeah. Yeah, Boliye. sir. I have got two questions. Yeah. One is, there are 25 members in the society. Out of that, 6 flats are illegal. They are not in the plan. How many flats? 25 number of flats. Okay. And out of that, 6 flats are not in the plan. In the plan, there are only 19. 6 are illegal, but they are the member of the society. Okay. They have got registration, stamp duty paid, everything. Okay. So this is the base. Now I have two questions. One is, in the meeting of redevelopment, whether these 6 people's opinion will be valued. That is one. Yeah. And second, while doing conveyance, these people's agreement is to be submitted to the adjudication officer or not? See, one is once you have made them the members. Yeah. So you have already accepted them as the members okay. So Correct. they have all the rights and benefits enjoyed by all the members. Okay. Okay. Only thing is now suppose when you go for redevelopment. Yeah. So plans, the area will be accepted as the plan. Yeah, obviously. Okay. But then you will have to plan out because in order they are already staying, you have made them members, issued them share certificate. So you treat them as a members and whatever everyone enjoys, they will also enjoy. Okay. So that will solve all your problems. Okay. In terms of that. Yeah, I got it. I mean, they have got all the rights. They have got all the rights to participate in the meeting, give their opinion, as well as has got right to have share in the new development place also. Yeah. I think that is the best way to resolve it. You can try once ke bhai tum illegal ho ye ho. So whatever you can benefit, you can extract from them. Try. Otherwise, you can just go ahead and do it because that should not be a case to take a litigation on that. No, rightly, because as you rightly said, more members consent should be there. Yeah. That we can do. Now, as far as adjudication is in the conveyance process. Correct. Once we put paper for adjudication, okay. So stamp duty registration of those flats which are in the plan, we need to submit only that, or even the illegal flat stamp duty also we have to submit for adjudication. No, it is if they are not stamped. No, they are stamped. Stamped and registered. Yeah, stamped and registered, sir. So you better put in while you are going for conveyance. Conveyance is not done, right? Yeah, conveyance we are in the process. Okay, so if the builder is cooperative, then no, it is deemed conveyance. Deemed conveyance, okay. Yeah, so then because you will have to submit the plans. Yeah. So the question may come, as per the plan there are 12 flats and you are giving for 18. Yeah. So that you will have to take a decision at that time what to do. Because ultimately the conveyance is executed in the name of society. Yeah, absolutely. Okay. And see, our problem is that society has got 25 members.
Yeah. And in the plan, once there are only 18 members, suppose. 18 members, yeah. So once for adjudication, once we're putting for adjudication, we are in the dilemma whether we should put for 25 members or 18 members. No, it is better that you show them the cards, but then just take an advance knowledge in that what is the best interest, because ultimately they are members of the society whose property, the society's name is going to on the property card. Okay. So automatically he also becomes beneficiary. Yes. So that you have to decide whichever consultant you are taking into to do your deemed conveyance. Okay, what is the best thing to get our work done? Because then it should not lead to something else. कि तुम 18 है, 25 आया है. But what is the best is that you need your name on the property card. Yeah. Now out of your discussion, third question arises here. So you said for the to whomsoever we are giving work for the conveyance, we are planning to do conveyance on our own, sir. Deemed conveyance on your own? Yeah, deemed conveyance on our society is residing at Ambernath. Yeah. And it is we do not have much profit as compared to Bombay, because there the rate of the land compared to the costing rate, there is no much difference. Correct. So we are short of funds and we do not want to invest much fund in the conveyance. So we are planning to conveyance stamp. Once if all the flats are registered stamp duty, the conveyance stamp duty is only 100 rupees. Yeah. Okay. It is only if you want to do it, it is excellent. But if you want to, only the charges of consultant will charge you that only, so that can take all the headaches of running after hearing and all that. But I am happy if you are taking the initiative and going. There is no harm. You only can represent your society. Yes. You can only go in front of the district register. Ambernath है तो I think maybe कल्याण में आपका होगा. नहीं अम्बरनाथ हाँ कल्याण में है. कल्याण में डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर थाना में हो. थाना में होगा. So if you are willing to take that trouble, nothing like it, no, because आप जितना खुद करेंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा. Okay. Thank you, sir. Yeah. What I conclude is then we may have only consultation from any advocate only for that stamp duty registration conveyance part only. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, Mr. Dinapur. Okay. Anybody has any other questions, please? Hello. Yes, Mr. Francis, go ahead. Can I ask? Regarding cluster redevelopment. Yeah. Plot is of Maharaj. Okay. It is a lease property, lease land. From Mada. Yeah. Okay. And the other plot is Mada tenant and BMC tenant. We can go for cluster redevelopment. Yeah, you will need NOC from both. Both, because they are the tenant. BMC tenant as well as the Mada tenant. Yeah. So you need NOC from BMC and you need NOC from Mada. Achha, the building people has to approach to them. Yeah. And get the NOC from them. Yeah, because recently regarding Mada redevelopment, there is a not so happy circular required that no Mada society individual plot will get NOC unless they go by cluster. Achha, okay, so advantage is the cluster. Yeah, but I think that is a very crude form of putting that condition, because there is a society in Malad where they are surrounded by 3 societies. One has done heavily, 2 societies have spent heavily on repairs, and one building has done redevelopment 8 years ago. So no one else wants to join them. So in such cases, the Mada will consider to give NOC if there is any such plot stuck that way. Okay. Mr. Lakshman Raj. Hello. Yeah. Sir, what is the GST available? We have members for GST lage kya? GST what? On we have flats.
in redevelopment? See, if you are going by redevelopment, the GST has to be paid by the builder. नहीं, वो रिया फ्लैट पे पूरा लगेगा या ना मार्केट प्राइस पे लगेगा या खाली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे लगेगा? No, when a builder is giving you, you are giving them your land for rehab, okay, and which he is giving you as a consider, and you are surrendering that previous flat and he is giving you a new flat. So GST is applicable on the rateable value minus 1/3 taken as land cost. So अगर आपका 1 करोड़ का डॉक्यूमेंट है तो आपको GST 67 lakhs पे लगेगा. 33 is as a standard deduction as land cost. ओके. और अगर 45 lakhs के अंदर का डॉक्यूमेंट है विद एन एरिया तो 1% लगता है, नहीं तो 5% लगता है. ओके, थैंक यू सर. कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? अगर सोसाइटी का कन्वेंस 1975 में हो गया है, हाँ, उसके बाद चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कोई मेंबर का, हाँ, तो बीच में 2 मेंबर ने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पड़ा, पर लास्ट वाले का हो गया स्टैम्प ड्यूटी. ओके. 2001 के पहले का है. नहीं, अगर आप बोल रहे कन्वेंस हो गया है तो सोसाइटी का नाम चढ़ गया प्रॉपर्टी कार्ड पे? हाँ, 1975 में चढ़ा है, फिर 78 में किसने लिया, फिर 92 में किसने लिया, फिर 94 में. सो वेयर इज द प्रॉब्लम नाउ? नहीं, प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम बीच में आ सकता है क्या? नहीं, कन्वेंस हो गया, आपका नाम प्रॉपर्टी कार्ड पे हो गया, खत्म हो गया बात. अच्छा. या so once your name is there on the property card society, then it's all yours, then there cannot be any problem. ओके, थैंक यू. थैंक यू मिस्टर गिरीश काले, आपका कोई प्रश्न था? मिस्टर गिरीश काले? नहीं, मेरा हो गया. ओके, मिस्टर धर्मेश? सर यस, थैंक यू. सर एक क्वेश्चन अभी अराइज हुआ है with respect to the GST. If there is a self redevelopment, Yes. is this GST still applicable? GST is applicable on the sale component. Right, only on the new cell component which is created, but not on the existing members, right? No. So in that case, if as you said about the funding, financing, if there is a possibility of the investment by existing members in additional space, तो उस पे GST लगेगा? उस पे लगेगा क्योंकि वो आपका डॉक्यूमेंट बनेगा ना कि दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग रिहैब एंड दैट विल बी अ सेपरेट डॉक्यूमेंट वेयर यू आर बाइंग एक्स्ट्रा एरिया. Right. Okay. Thank you, sir. Okay. Okay, anybody has any other questions, please? Yeah, sir, may I? Yes, Mr. Dinkar, go ahead. Akbar sir, I want the reference, as you said, there is you are running one redevelopment in Kalyan where the shop height is allowed 20 foot, you said. Correct. Yeah. So that will be benefit to us because my building also is on the main road. There are already shops in the building, and so we are planning the same. So that will be helpful to us. If we share the reference of the redeveloped building in Kalyan. I'll just tell you, actually it is my project only. Vallipir Road, as soon as you come out of Kalyan. Yeah. Okay. And you take a left on Vallipir Road, you will find the project Sky Heights. Okay. So in that, if you see there will be a sales office, you can just go inside and see the height. Yeah. I'll do it, sir. I'll do it. Thank you. Thank you, Mr. It's an achievement that 20 feet shop height is an achievement. Yeah, actually उसमें हम लोग ने 1.5 लिया है shop, but that height is available. Okay. Otherwise standard लेंगे तो minimum 14 तो मिलता ही है. हाँ, वो तो है. That is what I said, surprising 20 तो it's good. Okay, Mr. Dinkar will take another question also. Yeah, thank you, sir. Thank you. Mr. Chairman, who is logged in by the name of Mr. Chairman. Hello. Yes, please. Can I? Yes, Mr. Sanjay, go ahead. Yeah. Sir, our society doesn't have the conveyance as of now. But prior to getting the conveyance, the society is entering into a tie-up with the builder and society is insisting for a consent form.
for giving, you know, the redevelopment rights to the builder. So is it advisable, this type of approach by the society? See, if you don't have conveyance, can you hear me? Yes, yes. If you don't have conveyance, then that will be the first thing builder will take it up. Okay, I will put your name, I will do conveyance and give you the property card. But without conveyance, municipal will not accept the proposal. But the registrar has already given, you know, the sanction to that they have agreed that okay, the society has taken a meeting in presence of the registrar's representative, and so registrar has given a letter that okay, they nominate Swanand has to redevelop this property. So is it possible? If he has given permission, maybe he has given. But when you go to the municipality, they will ask for the title. Okay, whose name is there on the property card? If the previous owner name is there on the property card, then you will need his NOC. But then you can still go ahead. But it is advisable that first you carry out the conveyance, get your name on the property card. Because then without that, if you give it to the developer, he gets leverage to play around 6 months, 12 mahina, 1.5 mahina, 1 saal. You don't never know. So in that case, majority will play important role for giving consent. Yeah, majority have to decide. Okay, first let us get our name on the property card, and then we go for development or whatever it is. But majority has been influenced by saying that builder is going to avail the conveyance for the society. So everyone is, you know, giving consent. So is it advisable? बिल्डर बोल भी दिया, बिल्डर कर भी देगा, लेकिन फिर उसके टाइम से करेगा वो. But then a single अगर person कन्वेंस करना है, बिल्डर कन्वेंस किससे लेगा? आपके जो प्रॉपर्टी कार्ड पे नाम है उससे, राइट? हाँ, या. तो उसको पहला काम क्या करना पड़ेगा? वो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी कार्ड है, वो पहले सोसाइटी का नाम पे लेगा. सोसाइटी का नाम आएगा, उसके बाद बिल्डर आगे काम कर सकेगा. Okay, but in that case, issue by conveyance के bigger builder will just play around with you because municipality plan लेगा ही नहीं unless and then the NOC from the person whose name is on the property card उसका NOC bigger proposal लेगा ही नहीं, आगे ही नहीं बढ़ेगा आपका. Okay, anybody has any other questions please? और किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है किसी का? Sir, can I ask? I have one question. Yeah. Mr. Hiren Kamdar. Yeah. Hi. We have a we have 4 divisions in our plot in Borivali West. Here there are 2 tenanted and 2 freehold properties. Okay. And going for deemed conveyance in some time. But one of the tenanted property comes on the road side, and they are shops, and they are into road cutting also. Okay. Just wanted to know that since they are on road cutting and it is owned by a third party developer, once we go for deemed conveyance, get our conveyance, but the road cutting piece will lie still with the old the builder, and if we give a rights to a third party builder to do the development, but since it is on the same plot or same vicinity of the plot, will that be possible because of the road cutting piece? See, whatever road cutting will ultimately that portion there will be a subdivision of the plot to the extent of the road going, and that will be transferred to the municipal corporation. Right, but the existing builder who owns those tenanted properties won't leave it just like that, right? I mean, he will fight in the court. Now there is he'll have some FSI on that also, right? Yeah, whatever goes in the road cutting, with the new DP, you will get 2x the FSI. So if say 5,000 square foot is going in road cutting, the builder or whoever is developing that will get 10,000 square feet. So that 100% extra is getting free. Right. But the problem here is if we give to a third party developer and not to that developer who's owning the tenanted properties, then how does it work? See, अगर the whole basic fundamental है कि जो property card पे जिसका नाम है, he is the owner of that land.
So without his consent, you cannot go ahead. No, but once the deemed conveyance comes, then there will be division, डीम right? कन्वेंस हो गया तो आपका सोसाइटी का नाम आ गया प्रॉपर्टी कार्ड पे, तो फिर then you are the owner. Then you can decide whatever you want to do. Then no one has any rights to interfere. Yeah, but because that tenanted property, which are the shops on the road, that goes road cutting. उसका जो FSI है, that can be used only by the other tenanted property. Is that right? नहीं, that will be used by the जो प्लॉट से रोड जा रहा है वो प्लॉट को FSI मिलेगा. But that will then come to the society. Is that what you're saying? Yeah, it will come to your society. और अगर जिसका समझो शॉप more than 50% जा रहा है रोड में, तो he will get a rehab somewhere else. Okay. So that. Thank you, Mr. Hiren. Mr. Hiren will take up some other question. Yeah. Okay. Person by the name of Chairman Secretary. Mr. Chairman. Mr. Lakshman, you had a question? Sir, I have one more question. If 79A is not mandatory, it's just guidelines or direction, can the society... Sir, Go ahead, Mr. Lakshman, go ahead. If 79A is just not mandatory... Pardon? Yeah? Sir, what? Hello. Mr. Lakshman, please go ahead with your question. Yeah. Sir, if 79A is not mandatory, it is just a guideline. Can the society office bearer in collusion with the builder do not put public notice or tender into newspaper, just उसके फाइल को लाएंगे और करेंगे, चलेगा क्या? नहीं, like see, 79A has certain stipulations to follow, right? But in the if you want to spend anything above 1 lakh, you have to take a AGM route. Okay. And if you want to do construction or repair, that tendering process is there in the bylaws also. नहीं, वो redevelopment कर रहे हैं, उन लोग ने अपना builder लाया है, not making public notice, किसी को public notice के through invite नहीं किया, उनका ही एक friend को डाल दिया है. नहीं, certain rules you have to follow, but if a builder the society is getting, so certain more than 70%, 80% majority, बोलते हमारे पास majority है तो हम हमारे friend को लेके आएंगे. Yeah, correct. So what the judgment says, if a resolution is passed by the majority, then there is no problem in following. Then you don't need to follow 79A. Guidelines तो है ना कि public notice डालो to invite developers. हाँ, तो if they don't, these are the guidelines they have to follow. But the AGM you cannot pass. We don't want tender. We will not call paper notice. We cannot do that. उन लोग ने ऐसे ही किया है कि पेपर नोटिस डाला ही नहीं है, उन्होंने अपने फ्रेंड को that has to be brought to the notice of the deputy register. These are the bylaws and this is the procedure has not to be followed. The deputy register will issue a hearing notice to them for a hearing, and he will hear you out and hear them out. And if the tendering is not followed, he will issue order for the same. Okay, thank you, Mr. Lakshman. Yeah. Thank you. Tenanted property, then he has to pay 25%. What about MADA? MADA will only give you conveyance of your building. Only building, no, not the plot. Not the land. Okay, not the land. So they will not give you free land. Free land. No, see, the idea is MADA will give you always they will always give you NOC for redevelopment if it is there. Major repairs are required, building is in bad condition, then they are told not to take that risk and give that. Sir, there is a building, it's called total 17 flats. Out of 2 flats belongs to builder.
and the building construction. See, in the process of conveyance, the stamp duty is only if all the flats are registered, stamp duty paid. Then the conveyance stamp duty is only rupees 100. Okay. So no, the 2 flat belongs to builder only. It's not sold. It's still he is using it. So then either he decides to take it in his name, no? So that 2 flats will belong to the paid. Oh, that has to be registered. Oh, yeah. But then he has to pay for the stamp duty. Stamp duty, get it registered, and then only it will go ahead. And sir, once there is a managing committee as well as redevelopment committee. So who has the power to decide on all the points in the redevelopment matter is there? See, it is like maintaining more transparency. 2 committees are made. Managing committee is the main. Redevelopment committee does the groundwork, suggestions, and provides all the solutions and all that, which ultimately is put up to the managing committee, and then ultimately managing committee has to call for a special general body meeting and pass it. Okay, that way means the redevelopment committee doesn't have the power to interfere in every activities. Only managing committee. Thank you all, friends. They are authorized to do XYZ job as far as redevelopment is concerned. But ultimately, in redevelopment, it is always advisable to go to special general body meeting and get it passed. Sir, but signatories has to be managing committee because there cannot be the redevelopment committee will be separate committee. But no, that is the managing committee is what is approved and accepted by the registrar. Okay, the redevelopment committee is just for internal assessment and internal helping each other. Oh, okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you all, friends, for participating in this webinar. I thank Mr. Akbar Yuani for parting with his knowledge and experiences in the redevelopment and the self-redevelopment process. Mr. Akbar, bring your knowledge with our participants. With the permission of all the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all, friends, for attending and supporting this knowledge sharing. Everybody, and bye-bye. Thank you. Thank you, Akbar.